Adab, Namaskar, and a very good evening to everyone. Welcome to the yet another episode which is being brought to you by Aligarh Society of History and Archaeology, AISHA, and Ganga Jamni Foundation. We have been constantly hosting talks, lectures, and discussions on themes related with our past. Each week, we try to bring before you either a well known scholar or a well received work of some renowned scholar. We have hosted some of the topmost big banner names in the field of medieval as well as modern Indian history. And we have also talked to those who have brought very well received popular writings which have helped the general masses to grapple with past complexities in a very easy manner. If in some of our recent offerings we had scholars like Irfan Habib and Purushottam Agarwal, in others we had personalities like Tushar Gandhi, Attilio Petruccelli, and Razamir. We discussed some very popular works on Akbar, Sir Sayyid, and Gandhiji. And we also tried to bring before you such scholars like Swapna Liddle and Shashank Shekhar Sinha, who have done laudable work on our built heritage. Continuing this string, today we have invited another individual who has been churning out very popular and well received works in recent years on our monuments and helping general masses to make sense of them. I am talking of Madam Rana Safvi, who has definitely emerged as a page three personality amongst the present day writers on history. A well known product of the history department of Aligarh Muslim University, she is the winner of many awards and recognitions. Very recently, she was bestowed the Virni Award by Chhattisgarh government. Before that, she was the recipient of many such other awards like Yamini Hazarika Woman of Substance Award in 2020, Outstanding Achievement Award 2020 by La Martiniere Girls Alumni Association, Chishti India Harmony Award 2015 by India Harmony Foundation for promoting national harmony and brotherhood and understanding through appreciation of our common heritage and culture. She also was the recipient of HT Woman Right Choice Award in 2017. But above all, she has also been picked up amongst others by the communalists, and she has been shown as one of their deals in one of their hate campaigns. She definitely shines on our social media as a historian, a secular historian, writer, blogger, and a translator.
She is a passionate believer in India's Ganga Jamni Tehzeeb, that is syncretic culture, which is so much hated today, which she documented through her writings, podcasts, and videos. In 2011, she started the Twitter forum Shire, which was responsible for popularizing Urdu online. It is a unique platform which is still going strong with over 20,000 members. Rana Safvi is my senior and has published a number of books on culture, history, and monuments of India, including Tales from the Quran and Hadith. She has translated both the editions of Sir Syed Ahmad Khan's seminal work on Delhi, that is Asarus Sanadid. She has also translated Zahir Dehlavi's Dastan-e-Ghadar and four accounts of 19th and 20th century Delhi from Urdu to English. Who doesn't know about her Delhi trilogy? The first of which was Where Stones Speak, followed by The Forgotten City of Delhi. And the third of the series was Shah Jahanabad, the Living City of Old Delhi. Her recent most work is Saint, a folk tale, and other stories, lesser known monuments of India, published amidst the pandemic in December 2021. Welcome, Rana Appa. It's a real pleasure to host you once again in our show. Thank you so much, Nadeem, and for that very, very generous. And I don't know whether I deserve that introduction or not, but times are such that we do, all of us, you included, Shagufta, Ganga Jamni, Tehzeeb, Asha, we all do what we can to maintain the plural fabric of our country. Thank you so much, Nadeem, and Well, to start the journey, I would like to ask you a very basic, question. Uh, your journey started as Rana Zaidi, a student at Aligarh, and now you are the Rana Safvi, and this journey has been long. What have you to say about it? How, from that young girl studying history at Aligarh, now you are one of those who is being trawled by the media today? Uh, as you already mentioned, I did my master's from Aligarh in history. I had the UGC scholarship there. I did extremely well in my studies, but after that, I was not a very ambitious person, and I was quite happy to just get married and and then teach in a school and continue with like looking after my family. And it's only when we got posted into, my husband took up a job in the Middle East. It's when I went there and I started missing my friends and family and actually my roots, that I went back to history. I was teaching history in school, of course, but going back to my roots meant that when I came to Delhi, it wasn't just visiting relatives, it was also visiting monuments, it was visiting, reading, picking up books, taking them back to read, because by then my children were already grown up, and we were basically on our own and with a lot of time to kill. And that's when I started realize that there's much, of course, written about Delhi and its monument in academia, but there were not many popular books written recently. The books that had been written were written either in the pre-independence or a couple of books post-independence also. But
not the way I wanted to portray it. Today I was having a conversation with somebody on women travel writers. And I think I bring that same feminine touch into my writing when I write about monuments also. So that's when I realized, I said, okay, let me try. And at that point of time, I had no idea whether I'm going to, I'm going to even find a publisher. This is 2013. I started my book on Mehroli, and I did it. For me, the most important thing was to explore it and to feel it. So along with Asif Khan Dehelvi, who was very young at that time, is the founder of a heritage group called Delhi Karwan that does heritage walk. So along with Asif Khan Delhi, I started exploring Mehroli. I had thought I'd do one book on Delhi, but in when I went to Mehroli, I realized that there are so many monuments, many of them decaying, lost in ruinous condition, and that began a journey which resulted in the last book on Shah Jahanabad in 2019. And on the way, I have visited personally and documented over 450 monuments of Delhi. We will come to them. I mean, we will come to them slowly and gradually. Uh, so you say that it was, your interest in the monuments of Delhi that you started with, and the fact that there was a paucity of writings on them that you decided to take up the study of the heritage structures at Delhi and other places. Now, did you formally study architectural history or heritage in your university years, or was it something which you took up only when you got interested? So I think you would have also done the same paper that we did in MA. There was a paper on architecture and art and architecture. That was just one paper. So it isn't something that I studied as a speciality. It was just part of the rest of the subjects that I did in MA. And I remember that my term paper was on the Taj Mahal. And Kaisar Saab was my tutor for that. So and he had praised it. So this is, like when I was doing my MA, that is 76 to 78, art history was a very unknown field, at least in Aligarh for us. It would have been very well known internationally, but for us living a very sheltered life, it was very I had no idea about that. Had I known that there is a discipline called art history, I would have definitely pursued that, because that is where my actual passion lies. Well, you are quite lucky that you did offer that course on architecture in your post graduation. Unfortunately, when I was doing my MA, I had no such course which I had offered. I mean, I was doing economic history and so on and so forth. And that is why I asked whether you developed this interest later on was it from your MA days. And now that I learned that you also wrote a term paper on the Taj Mahal, that shows how you started working on them. Now, let us remain a little more on your past before I pass on to your works. Uh, you belong to a family which, from one side, traces its origins from the Banaras princely state, and from the other side, to a very well known Kasbah of Aligarh, known for its Shia Sayyid Zamidars. Can your present day interests in heritage be traced to these origins? What was the influence of these places on you as a person? See, definitely today I am, when my name comes up, it's very often in the context of our syncretic culture. And I write in all my bios, that proud believer in Ganga Jamni Tehzeeb. So my maternal background of my grandfather being the Diwan of Banaras state, and being so closely associated with Kashi Naresh. In fact, my maternal family, which is from Kachgaon in Jaunpur, has sent many Diwans to Banaras, the Banaras state. So many of them were Diwans of Kashi and attached with Kashi Naresh. So that itself is something that I grew up on. I grew up hearing my aunt, who was 8 years old at that time,
talking about how she was, sitting on one of the lead elephants in the Ram Leela procession, because the Maharaja of Banaras, the Kashi Naresh, was studying in Mayo College at that time, and he couldn't come. So Diwan Saab's daughter was there. Now, this is something that, like we just took for granted when we were young. But today, when you hear about it, see how many stereotypes. It's a girl, it's a Muslim girl, and in the middle of a Ram Leela procession. And Ram Leela procession of Ramnagar, as you know, is a UNESCO event. So I don't think that's possible today. So I grew up in a Nehruvian atmosphere. My and I imbibe that culture of syncretism from there, and that's how. And whenever anybody says, I say I have lived that life. I am living that life even now. And as far as my Jalali, my paternal background is concerned, my paternal grandfather was in the administrative services. He retired as member board of revenue. So my paternal family was, there was a lot of emphasis on education. And my dada did his MA in English from MAO before AMU was formed in 1916. And my uncles and my mother, everybody, they studied in AMU. So that has been the education, and the emphasis on liberal arts is something that I've inherited from both my families, that education is a must, and especially for girls. Ranapa, I mean, I have not been to Banaras in the same fashion as you have been. I mean, I have been there once for a seminar or two. I don't know much about the intricacies of the place, but as far as Jalali is concerned, uh, you know, uh, there's a very small, kasbah in Aligarh, uh, but has very old origins. I mean, I remember once carrying out surveys of indigo vats as far as in the area of Jalali. And while we were, I mean, along with Professor Iqtida Alam Khan, we were carrying on these, surveys of the indigo production in Jalali region. I had the opportunity of staying in some of the havelis which belong to the Sayyids out there. And in fact, there is a story uh, uh, which was narrated to me that there is a Haveli which dates back to the period of Babar. In fact, one of the informants told me, it was a story, no doubt, कि जब बाबर आए थे तो उनकी फौजें इसके तहखाने में रुकी थी, and so on and so forth. Probably it's all hearsay, but then there is still a mosque with the inscription of Balban and Babar as well as Akbar, which still exists in Jalali. So, I mean, coming from a place with such heritage structures, old mansions, old technologies dating back to Mughal period. In fact, there is also a site which is associated with Al Beruni. I mean, you might have, while living as a child there, heard about these stories. Did they affect you? Were you interested in them? What would be your take on these? Of course, these stories interested me. I've been fascinated by old houses, old buildings, monuments. I think ever since I can remember, and the mosque in Jalali is, of course, not very far from our house, and we've been there. The house that my grandfather built is not a very old one, because my grandfather was orphaned when he was a child, and he was a self-made man. And our house, I think, dates back to maybe 1930s or 40s, but it has a very big imambara. And so for us growing up, it was we went to Jalali during Muharram. So for us, Jalali is associated with Azadari, with Muharram, with the Imam Badas, and so for like जो गश लगाते हैं 9 मुहर्रम को, शब आशूर, ये सब चीजें जो ना, ये सब बहुत एक बड़े अहम वो था हिस्सा हमारे बचपन का.
और कहानियों का जहाँ तक सवाल है, तो वी ग्रू अप ऑन स्टोरीज ऑफ ओल्ड हाउसेस एंड नॉट बाबर बट स्टोरीज ऑफ जिन मामू कि यहाँ पे जिन्नाती मस्जिद है, यहाँ पे अजादारी करते हैं, वो रात में मातम होता है. So for me, like all this was very, like part of life. So it wasn't so difficult to accept कि सुपर नेचुरल क्या होता है, या ये कि अकीदा जो था वो बहुत पुख्ता था. So for me, I would say that what Jalali gave me was a very, very strong belief and faith. Uh, right. As you mentioned, Imam Bada. I think you must be aware that one of the Imam Badas at Jalali is as old as the Bada Imam Bada of Lucknow, dating Yes. back to the same period. Possibly built a few years either before or after the Bada Imam Bada was built at Lucknow by the Nawab Jafawat. So you have a rich heritage as far as one of your places of origin is concerned. Now, my question, why I was stressing on this Jalali connection and Banaras connection is that in your recent post work, I mean, we will come to that in detail a little later, but just a question. You pick up, monuments from various parts of the country. But what amazed me was that there is no heritage structure from either Banaras or from Jalali, where you grew up. You never included any of them. So that is now for the sequel. Yeah, I okay. tried to actually, I tried to actually represent as many forms of architecture and as many states as I could. So since from UP I had taken the Bhitargaon temple, I thought the Jalali Mosque can go into the next book, because I want to document another 20, Fine, fine. inshallah. Inshallah, And inshallah. as far as Banaras is concerned, I have still to explore Banaras properly. I have explored it culturally, but as far as architecture is concerned, its building is concerned, I haven't explored it that well. So that is on the agenda. There are a number of things I want to visit there. I have asked Shagufta that I must go with her. So maybe now the next phase will start. But they are Fine. definitely part of what I plan to do next. Well, in answering one of my questions, you told that soon after your MA, you went out of the country after your marriage, and it was only after your return that we find that you slowly and gradually started walking towards where you are today. Um, I hear that you taught in a school as a social service to the children somewhere in Kashmir or somewhere in the hills, and you started writing blogs on food and holding food festivals in hotels. So, how from these social services, teaching children in schools without taking the remuneration for that, writing blogs, food blogs, holding food festivals, you suddenly turn to heritage. I mean, I still want to know how this transformation took place. See, the social service comes in 2016. In 2013, I started Shire in 2011. And that was when I started getting offers to write. My blog I had started in 2004. I lost my mother. She had a very painful end because of cancer, and I was in Saudi Arabia. I wasn't able to spend much time with her. I was with her towards the end. And when I went back to Saudi Arabia, the family was not around. I was grieving. And that's when I started writing. And for me, that was a kind of catharsis to write. I wrote about her and I wrote about her life. That's on my blog. It's called A Daughter's Tribute. And that is how my writing journey began. I had been good at writing and stuff like that. In fact, I did my undergraduate in literature. And it's only Professor Irfan Habib, because I saw him delivering a lecture at the height of emergency, when I decided, okay, this is what I want to study.
And I heard that he teaches history and he is a professor, head of the department of history department. And I said, okay, this is what I want to do. So I came to do my MA in masters in history. So to go back, so then I started writing after my mother, and then I started Shire. And when I started getting offers, it was on Urdu poetry. And I was writing at that time because Tehelka was a very popular magazine in 2011-12. I was writing for Tehelka, and then after two articles on Urdu poetry, I said, see, this is not my field. This is just an hobby. My field is history. And they said, in history, what is it you are interested in? I had, of course, been teaching from, I think, from 1981 onwards, I had been teaching history. I taught in Jamshedpur, then I taught in Saudi Arabia. So for many years, I taught history in the senior school level. So I said, my field is history. I'd like to write about that. And as I said, my interest in monuments was already there. So Professor Verma used to teach us. So I said, so I went and I was already exploring monuments. This while all this was happening, we were still living in Dubai. I decided, I took the call. I said, okay, if I want to write about Delhi, and especially I want to write a book, not just blogs, I should shift to Delhi. So my husband continued staying in Dubai, and I shifted bag and baggage to Delhi. So I came here and I started writing, and I wrote my first book, and I was very active on Twitter, as you know, right from 2009 when I've joined. And online, I met Sabah Haji, who was the director of Haji Public School, and she used to send out appeals for teachers, volunteers. And I found that it was a very noble service, that first generation level learners are being taught by people who are something, and they've reached a certain stature. So I saw a lot of well-known names going there, applying there. And I told her, I said, I also want to come. She said, okay. And in 2016, I set off for Breswana. I had actually no idea where Breswana was. I just knew it's in the hills of Kashmir. When I reached Doda, um, uh, her father was there to receive me, and I was told that I have to go on horseback all the way up, because 8 kilometers there was no motorable road. I said, I don't think I can do it. But my children, Sabah, everybody, they had great faith. They said, if you want to do it, you can definitely do it. So there I was for the first time going up on a horse all the way up, पूरे रास्ते याली मदद करते करते मैं 3-4 घंटे का रास्ता करके मैं वहां पहुंची. एंड इंटरेस्टिंगली द पर्सन जो मेरा साथ जो थे, जो सही जो द पर्सन हु जिनका घोड़ा था, हिज नेम वाज शाबान. एंड आई टोल्ड शाबान, आई सेड, आप मेरा साथ नहीं छोड़िएगा, पूरे रास्ते पकड़े रहिएगा इसकी लगाम. एंड ही डिड दैट. His son Ramzan was one of the students I taught. So for me that was a very fulfilling uh, uh, work to do, that people who have had no access to education, who have had no access to schools, their children, जैसे मैंने कहा कि ये जो थे, ये इनके घोड़े चलाते थे, वहाँ carpenters थे, वहाँ पे मतलब जो एक गांव था. I'll give you an example. The first day I reached, Sabah took me out and I went and I saw कि एक छोटा सा जैसे गांव में होता है gathering थी, वहाँ उपले उपले थोपे जा रहे थे. And suddenly this little girl comes out and she says, मैम will you please come for tea? And for me that was a huge shock, कि इस तरह के एक scene में एक लड़की आ रही है in such perfect English, she's saying, मैम please come in for tea. So I realized कि ये सबक ने कितना फर्क किया है वहां पर. She's made such a difference in the life of people. And so I was there for 3 months, which was what their volunteer period is. And one of the best experiences of my life, to be able to give something to, Right. like. Right. I mean, that is how you started. Now, uh, uh, no, ultimately, after doing all that, I mean, after doing your social service, after being outside India, gaining experience, you returned back, and then you ultimately decided to go for a proper study of the Delhi monuments. And you, I mean, thought of writing a series of books on Delhi, right? नहीं, Now, पहली किताब मेरी आ चुकी थी. When I went to the Breswana, my book on Mehroli was already out, and I was writing the Forgotten Cities at that point of time. okay. Now, what was your methodology in dealing with Delhi monuments? I mean, क्या आपका तरीका था? क्या आपने
Yeah, we are aware that there was a typical way of General Cunningham. He had his own methodology of surveying and exploring. What type of method did you choose to deal with the monuments of Delhi? So for me, when I started writing my first book, it was very instinctive because I was not trained in either writing or in methodology at that point of time. ये तो सब मैंने बाद में सीखा है. And the first book I wrote, consulted I consulted Bashiruddin Ahmad Khan. मतलब बशीरुद्दीन अहमद साहब की जो किताब है वाक़यात दारुल हुकूमत दिल्ली और असारुस सरादी, these were the two books that I was referring to along with Maulvi Zafar Hassan's Monuments of Delhi. And इसको जब मैंने पढ़ा, then I realized that in Urdu books there's a certain way of writing, and that's the style I adopted for my books. That एक थोड़ा सा narrative history with lot of verses in it, and कि I thought कि थोड़ा सा, if to make it interesting for the audience, not just a dry history of monuments, ये सब elements डाले मैंने, थोड़ी सी oral history, because अगर आप बशीरुद्दीन अहमद देखिए तो वो बहुत सारी oral history डालते हैं, तो वो सब जो था, ये style जो मैंने दिल्ली trilogy में लिखा है, which later on has become my style, is something that I think was a natural style of mine, which I imbibed. आपकी आवाज नहीं आ रही, you are mute. Am I? Yeah, अब आ गई. What I am saying is that I mean, when you started visiting the monuments, what was your modus operandi? How did you choose कि किस monument को हमको कैसे cover करना है? देखिए मॉन्यूमेंट्स तो सारे ही मैंने कवर किए हैं, इसलिए उसमें कोई चॉइस नहीं थी. और मॉन्यूमेंट्स पहले में आपको किसको करना है, फिर किधर जाना है, कोई तो आपके जहन में कोई एक फॉर्मेट रहा होगा. सो दिल्ली, एज यू नो, इतने ज्यादा हैं यहाँ पे, तो इलाके वाइज करती थी कि आज जैसे गई, तो अब जैसे मैं मेहरौली गई हूँ, तो टुडे आई विल ऑन वन डे आई वुड कवर, or it would take 2 or 3 days, I would cover Sanjay One, which is where Lal Kot and the ruins of Lal Kot are. So ये cover किया, ऐसे कर करके every day I would have, and then in a week, जैसे 2-3 दिन मैं field work करती थी, monuments पे जाती थी, and when I would go to the monuments, I would like उसको ऊपर से लेके नीचे तक, अंदर से बाहर से, हर तरफ से उसको छानती थी कि एक एक चीज टू गो एंड अंडरस्टैंड, टू फील दैट प्लेस. दिल्ली के एंड मॉन्यूमेंट्स, राना, पर दिल्ली के मॉन्यूमेंट्स पे इससे पहले भी काम हुआ जी. किताबें लिखी गई 19th सेंचुरी से लेके और अब तक. there are many works which have been done on the monuments of Delhi. तो अगर उस कॉन्टेक्स्ट पे आप देखें तो जो प्रीवियस वर्क्स हैं विज़ावी देम, आपने क्या उसमें ऐड किया या आपका क्या नजरिया था? आपने उन पे कुछ रिफॉर्म्स किए, उनमें तरमीम की, एडिशंस किए, या क्या आपका वो रहा? सो मेरा जो था, जैसे कि मैंने कहा था पहले कि आई डिडंट वांट अ वेरी ड्राई बुक. अगर आप मौलवी जफर हसन देखें तो उन्होंने सारे मॉन्यूमेंट्स दिल्ली के तकरीबन लिस्ट कर दिए हैं, उसमें कोई बचा नहीं होगा. लेकिन वो जैसे इसका अर्ज ये है, इसका तूल ये है, इसकी चौड़ाई ये है, फला अहद में बना ये, दैट इज हाउ ही राइट्स इट. For me, I wanted to make, the title of my series is Where Stones Speak. For me, ever since I remember, whenever I have gone to a monument, and the first monument that I remember this happening to me is Fatehpur Sikri. I think I was 13-14 साल की रही होंगी जब मैं गई, और आपने तो उस पे इतना लिखा है कि when I went there, I would stand and try and imagine यहाँ पे क्या हुआ था, किसने क्या किया था. At that time, I was very far removed from history. I was just in school, and so this is something that has been there. So when I started exploring the Delhi monuments, for me it was not only just the historical aspect. वो तो मैंने फिर इन किताबों से रिसर्च किया. आप लोग, मुझे फारसी नहीं आती है, अब सीख रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने जो ट्रांसलेशंस किए हुए हैं, जैसे आपकी वो है ट्रांसलेशन ऑन रेड फोर्ट, तो ये सब ट्रांसलेशन मैं पढ़ती थी. आई वुड रीड, उर्दू में पढ़ लेती थी, तो उर्दू की किताबों से मैं लेती थी. सो दैट academic research was on one side. My feelings were on another side, and the third side was कि आज वो monument कैसा है, और अगर उस monument में हम खड़े होकर हमें क्या एहसास हो रहा है. So that, I think, is somewhere what made my book different. I used a lot of Urdu verses in it,
एज़ आई सेड, ये जैसे कि अगर आप देखें तो सर सैयद अहमद खान भी इस्तेमाल करते हैं काफ़ी, उनके भी काफ़ी उसमें असर-ओ-सनादिद में वो काफ़ी शेरो शायरी का उन्होंने इस्तेमाल किया है। उनको तो फ़ारसी किया है, मैंने ख़ैर उर्दू किया। सो व्हाट आई वुड डू इज़, जैसे कि जितना लिखने में वक़्त लगा पहली किताब में, उतना ही शेर के जो उसमें लगा इंतखाब में। रनापा जैसे बशीरुद्दीन अहमद की किताब है ना? हाँ, दिल्ली के मॉन्यूमेंट्स के हाँ, ऊपर। मौलवी जफर हसन की जो पूरी हाँ, सीरीज है, जो उन्होंने एक एक हाँ, मॉन्यूमेंट को कर दिया है। आसारुस सनादीद है ना? मोर रिसेंटली जो इंटैक्ट के जो वॉल्यूम्स, 2 हाँ। वॉल्यूम्स आए हैं जिन्होंने वो किया है। अगर इन 4 को देखें तो इसमें से सबसे ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए कौन-सा साबित हुआ और कौन से आपने ज़्यादा इंस्पायर हुए जिनसे आपने बोरो किया? देखिए, तीनों का ही मैंने बहुत इंटैक्ट की वॉल्यूम नहीं मैंने देखी। मैं मतलब है मेरे पास, लेकिन उसको मैंने बाद में कंसल्ट किया था जब मुझे 1-2 मॉन्यूमेंट्स नहीं लोकेट कर पा रही थी। बट अगर मैं आप देखिए तो मेरा जो स्टाइल है लिखने का, एक नेचुरल अपने आप से जो डेवलप हो गया, इट्स नॉट समथिंग दैट आई डेवलप्ड कॉन्शियसली। आई डिडन्ट स्टार्ट ऑन दिस जर्नी कॉन्शियसली, तो सब होता गया अपने आप हुँ, से। हुँ, हुँ, सो द हुँ, दिस द स्टाइल दैट आई अडॉप्टेड इज़ आई थिंक समवेयर बिटवीन मौलवी बशीरुद्दीन अहमद एंड सर सैयद अहमद खान। And the details I took from Maulvi Zafar Hasan. All the actual details of monuments, क्योंकि जो सारे एग्जैक्ट डिटेल्स हैं कि इसका किस अहद में बना है, इसकी क्या चौड़ाई है, क्या आर्किटेक्चरल स्टाइल है, कौन सा पत्थर इस्तेमाल हुआ, all that I took from Maulvi Zafar Hasan. But style was, and the one that अगर मेरी फेवरेट कहिए तो I think I like narrative history, तो असारुल सनादिद की पहली वॉल्यूम और हुँ। बशीरुद्दीन अहमद साहब की किताब है। वेल आई मीन आपने अभी आंसर देने में फ़ारसी का ज़िक्र किया, उर्दू का ज़िक्र किया और हुँ। जो आपके क्रिटिक्स रहे हैं, उनमें से कुछ लोगों ने डाउट किया आपकी फ़ारसी को। जबकि फारसी तो कुछ फ़ारसी के जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने आपके ट्रांसलेशंस को, आपके वर्क को काफ़ी सराहा। तो दोनों चीज़ें मौजूद हैं। आई मीन देयर आर सर्टेन वेल नोन अथॉरिटीज़ who really appreciated the type of work which you did, but there were also critiques, right? तो दो जाहिर है कि हर स्कॉलर की जिंदगी में क्रिटिक्स भी आते हैं, अप्रिसिएशन भी होता है। यू गॉट द ड्यू शेयर ऑफ बोथ ऑफ देम, बट wasn't it a very brave decision on your part to take up the translation of such works as Asarus Sanadi, Dastan Ghadar at a moment जब फारसी जाहिर है कि हम लोगों की, क्योंकि हम लोग फारसी दाँ तो नहीं हैं, तो उसका ट्रांसलेशन लेने में आपने अभी ज़िक्र किया मेरे जो लाल किला आगरा पे मैंने आर्टिकल लिखा है, जो मैंने एक पैसेज को मैंने ट्रांसलेट किया है। आई रिमेंबर कितनी मुझे दिक्कत उसमें आई थी और कैसे-कैसे किया था। और यू वर ब्रेव इनफ कि 2 इतने इम्पोर्टेंट टेक्स्ट आपने टेक अप कर लिए और उनको कंप्लीट किया। व्हाट गिव यू द स्ट्रेंथ व्हाई यू टूक अप सच वर्क्स? यू नो एक तो मैंने दास्तान गदर ट्रांसलेट की थी। तो आई वाज़ रीडिंग द बुक बाय डालरम्पल, द लास्ट एम्परर, द लास्ट मुगल आई थिंक। सो ही सेज इन दैट कि देयर इज़ दिस वंडरफुल बुक कॉल्ड दास्तान गदर व्हिच इज़ रिटन बाय ज़हीर दहलवी, एंड आई एम सरप्राइज्ड नोबडी हैज़ ट्रांसलेटेड इट सो फार। आई सेड अरे वाह! ये तो एक मुझे अच्छा आइडिया मिल गया। सो आई स्टार्टेड ट्रांसलेटिंग इट। उसमें मुझे इतनी कोई मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि उसमें जो मुश्किल हुई थी वाज़ एक्चुअली कोरिलेटिंग द हिस्टोरिकल इवेंट्स, बिकॉज़ वो तो सिर्फ़ ये कहते हैं एक रोज़ ये हुआ, उस दिन ये हुआ, सो यू नो लाइक कनेक्टिंग कि अच्छा ये 8 जून का वाक़या है, ये बद्री की सराय वाली लड़ाई है, सो उसमें तो वो आया। ट्रांसलेशन में मुझे कोई इतनी परेशानी नहीं हुई। आई वाज़ वेरी लकी दैट मेरे सर पे प्रोफ़ेसर शम्सुर रहमान फारूकी साहब का हाथ था, और पूरे ट्रांसलेशंस में, दोनों की किताबों के ट्रांसलेशन में वो मुस्तकिल उन्होंने मेरा साथ दिया। तो एक जगह दास्तान गदर में मुझे याद है मैं उनके पास गई, मैंने कहा अच्छा, मैं ढूँढ-ढूँढ के परेशान हो गई थी, मुझे कहीं नहीं मिल रहा था। मैंने बहुत लोगों से पूछा, क्योंकि एक उसमें सेंटेंस था कि सफर मीना की पलटन आ गई। अब आई केप्ट लुकिंग अप कि भई सफर मीना कोई शहर है, कोई रियासत है। So then I wrote down, and we would talk on the phone. वो मुझे, मैं उन्हें व्हाट्सएप करती थी अपने सवाल, and he would call me up.
तो फिर एक दिन वो दिल्ली आए, ही सेड तुम आ जाओ, तुम्हारे जितने सवाल हैं मैं जवाब दे देता हूँ। सो आई वेंट टू मैंने सेड सर सफर मीना क्या है? तो बहुत हँसे, कहने लगे सैपर्स एंड माइनर्स है। सो यू नो लाइक ये तो खैर इसमें तो ये 2 ही 3 चीज़ों की मुझे परेशानी हुई थी। इट वाज़न्ट वेरी डिफिकल्ट, मैं लेकिन जहाँ आपको तक इसमें यहाँ पे ज़रा सा रोक रहा हूँ, अभी आप आगे बोलिएगा, मुझे एक चीज़ याद आ गई। मैं उन 2 स्कॉलर्स के नाम नहीं लूँगा। 2 बहुत ही बड़े स्कॉलर्स, दोनों अलीगढ़ के, और दोनों की हम लोग बहुत इज़्ज़त करते हैं। दोनों अपने ज़माने में जब वो काम कर रहे थे, तो वो लोग जाके मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी बैठा करते थे और फ़ारसी के टेक्स्ट वहाँ पढ़ा करते थे। तो उनमें से एक बहुत ही फेमस स्कॉलर जो आज हैं, मतलब हुए फील्ड ऑफ मिडिवल इंडियन हिस्ट्री में, वो एक टेक्स्ट पढ़ रहे थे और पढ़ते-पढ़ते अचानक वो बोले कि अरे! असल में वो उस कमरे में बैठ के काम कर रहे थे जहाँ मेरे वालिद का ऑफिस था। माय फादर वाज इन चार्ज ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्शन। सो बोथ ऑफ दीज़ ग्रेट स्कॉलर्स वर सिटिंग इन द सेम रूम वेयर माय फादर यूज्ड टू सिट। तो एक स्कॉलर ने बहुत अचंभे से पढ़ते-पढ़ते सर उठाया और मेरे वालिद की तरफ देख के कहा, मौलाना, इस पे तो बाबर के बारे में लिखा है, बा अफ़वाज काहिरा हमला नमूद। क्या काहिरा की फौजें लेके वो उन्होंने हमला किया था? तो and then the other scholar corrected him that Kahira in Farsi does not only refer to Cairo, the capital city of Egypt, but also means ferocious. तो हुँ, ये प्रॉब्लम इसीलिए मैंने पूछा कि जो फारसी या कोई भी जबान, यहाँ तक कि अंग्रेजी, हुँ, उसके अपनी जो टर्मिनोलॉजी होती है वो हुँ, अलग-अलग सेंसेस हुँ, ला सकती है। एंड आसार सनादीद में भी और दास्तान गदर में भी, या किसी, क्योंकि ये सारी टेक्स्ट जो हैं वो एक पर्टिकुलर पीरियड में लिखी जा रही हुँ। हैं, तो उसको समझना आसान काम नहीं है। So that is देखिए why I जहाँ asked you हाँ, about the experience of सो how you tackle these problems which you got. सी असारो सनादीद में तो बहुत परेशानियाँ आई थी। असारो सनादीद वाज़ नॉट ईज़ी। आई टूक इट अप इन अ लॉट ऑफ इनोसेंस, यू नो लाइक एज़ अ एलुमनाई ऑफ अलीगढ़, दिस इज़ समथिंग आई मस्ट डू एज़ अ ट्रिब्यूट टू माय द फाउंडर ऑफ अलीगढ़। तो ये मैंने मतलब बहुत ही एक मासूमियत से कहिए या एक बेवकूफ़ी कहिए, फूल हार्डनेस कहिए, जो भी कहिए, आई वुड नॉट कॉल इट ब्रेवरी बिकॉज़ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई डिडंट रियली रियलाइज़ कि मैं कितना बड़ा एक काम करने जा रही हूँ। मैंने उसको लिया एंड आई सेड कि ओके लेट मी ट्रांसलेट इट। So I was already working on the trilogy. I was already referring to the edition 2 of Asaro Sanadid. Asaro Sanadid का edition 2 मैंने लिख करना शुरू किया। अच्छा, क्योंकि मैं monuments पे जा रही थी, जितने उसमें तकरीबन monuments लिखे गए और जो अब surviving है, वो सब मैं visit कर चुकी थी। So understanding that was not difficult, क्योंकि वो तो वही डिस्क्राइब कर रहे हैं जो मैं देख चुकी थी या जो मैं एक्सपीरियंस कर चुकी थी, जिसके बारे में मैं पढ़ चुकी थी। उसके बाद फिर आई वाज रिसर्चिंग, मैं यही कहूंगी कि अच्छा देखिए, आई हैव बीन वेरी फ्री एंड फ्रैंक विथ माय एक्सपीरियंसेस एंड ऑफ माय ओन लर्निंग प्रोसेस, कि मैं मतलब पूरा रास्ता मैं सीखती चली जा रही हूँ। जो लोग मेरी उर्दू पे सवाल उठाते हैं वो इसलिए उठाते हैं क्योंकि आई वाज वेरी यू नो फ्रैंक एंड ऑनेस्ट अबाउट माय जर्नी इन उर्दू। इन 2009 उर्दू जो थी मैं कहीं ना कहीं भूल चुकी थी, क्योंकि बचपन में सीखी, उसके बाद फिर अंग्रेजी में चले गए और उर्दू कहीं ना कहीं भूल गए। लेकिन 2009 में जब मैंने शायर शुरू किया एंड आई स्टार्टेड मतलब पोस्टिंग ऑन उर्दू, आई वांटेड टू लर्न मोर अबाउट इट। तो मैंने कुछ लोगों से पूछा, मैंने कहा कैसे सीखे? अच्छा, सऊदी अरेबिया में थे, इट वाजंट इजी कि मैं किसी उर्दू से का ट्यूटर ढूंढ लूं। तो मुझे 2-3 लोगों ने कहा आप एनसीईआरटी की किताबें डाउनलोड कर लीजिए, आप उससे सीखिए। तो वहां से मैंने सीखना शुरू किया एंड दैट्स हाउ चंद्रशेखर साहब का आ रहा है, ही हैज आल्सो बीन वेरी हेल्पफुल टू मी। तो मैंने वहां से फिर उसके बाद उर्दू सीखनी शुरू की एंड हल्के हल्के सीख गए, बट बिकॉज आई वाज सो ऑनेस्ट अबाउट माय जर्नी, हाँ, पीपल naturally, क्वेश्चन इट। राइट, राइट, राइट। लेकिन एक एक सवाल मेरे ज़हन में उठता है, और जो आपसे किया भी गया, कुछ लोगों ने किया था, कि आसारुस-सनादीद का तो एक ट्रांसलेशन मौजूद था। तो व्हाई डिड यू टेक इट अप? जो एक चीज़ तो ट्रांसलेट हो चुकी थी। वो ट्रांसलेशन जो था, जब मैंने एक्चुअली मैंने पहले जो था अपनी किताब के लिए उसके ट्रांसलेशन को लिया था, प्रोफेसर नाथ की जो किताब है, आई टुक इट, इट वाज आउट ऑफ प्रिंट उस टाइम 2015 में जब मैंने लिया था।
तो आई यूज टू गो टू द आर्काइव लाइब्रेरी, वहां से मैंने पढ़ना शुरू किया। एंड देन उसके बाद मैंने ये देखा कि इसमें इन्होंने सारे मॉन्यूमेंट्स नहीं कवर किए हैं विच आई वांटेड टू कवर, so that is why I took that up. अच्छा, जब मैं वो कर रही थी is when I realized that there is, I read Professor Sim Naeem's article just as soon as I started almost exploring Asaru Sanadid and decided to translate it. I read के एक वॉल्यूम एडिशन 1 भी है। अच्छा, तब तक के मैं काफी ट्रांसलेशन कर चुकी थी एडिशन 2 का। तो मैंने फिर क्या करा कि एडिशन 1 एडिशन 2 के साथ दिस इज हाउ आई हैड प्लान्ड द बुक कि आई वुड राइट जैसे कि बड़ी मंजिल, अब नीचे उसके बाद आई रोट क्योंकि पहले इन्होंने काफी फर्क है दोनों में जैसा आपको मालूम है, तो मैं आई वुड राइट ओके एडिशन 2 में ही राइट्स दिस एंड एडिशन 1 ही राइट्स दिस, मोर ऑफ अ कंपैरेटिव स्टडी। एंड द थर्ड पार्ट ऑफ इट वाज कि मैं जब गई तो मुझे वो कैसा मिला, मतलब उनके डिस्क्रिप्शन थे, जैसे लाल किले में तो ये बहुत ज्यादा है। सो दैट इज हाउ आई हैड थॉट ऑफ इट एंड दैट इज हाउ आई पिच्ड द बुक टू तुलिका बुक्स। वहां पे तुलिका में जब ये गया, ये 2017 की बात होगी, 16-17 की बात, तो 16 की है शायद, 2016। तो प्रोफेसर नारायणी गुप्ता आई थी एंड शी सेड के दिस बुक हैज नॉट बीन ट्रांसलेटेड सो फार, जब तुमने इतनी हिम्मत करी है तो एडिशन 1 और एडिशन 2 अलग अलग करो, डू नॉट मेक इट अ कंपैरेटिव स्टडी। आई सेड ओके, मैंने बड़ी आसानी से हाँ कह दिया। एडिशन 1 में जहां तक मॉन्यूमेंट्स का सवाल था मुझे कोई मुश्किल परेशानी नहीं आई, लेकिन भैया जब उसके उस पे आए दिल्ली और दिल्ली के लोगों के बारे में तो करना पसीना छूट गया। 1 साल लगा मुझे सिर्फ उसमें। एंड दिस इज वेयर अगेन मेरी ये फील्ड नहीं है, उर्दू अरबी फारसी इज नॉट माय फील्ड, माय फील्ड इज हिस्ट्री। तो इसमें मुझे फिर फारूकी साहब ने बहुत ज्यादा मदद की, जहां वो जो उनके वो ऑनरिफिक्स हैं उसमें मैं उनको अलकाब में मैं उनको रोज भेजती थी कि सर इसका क्या मतलब है। अच्छा, फिर वो मुझे फोन करते थे, वो कहते थे, फिर हमारे एक दोस्त हैं अजमल सिद्दीकी, शायर हैं, वो फेसबुक पे बहुत एक्टिव है, फिर मैं अजमल को मैसेज करती थी, अजमल इसके बारे में बताओ। फिर अजमल को जो नहीं समझ में आता था तो मैं फारूकी साहब को भेजती थी। इसके लिए मैंने एक मुफ्ती साहब को भी रखा था, मुफ्ती साहब आते थे, ही वॉज वेरी कन्वर्सेंट with Arabic and Farsi, who would Well, try to explain ke I would inform you that even Sir Jadunath Sarkar, the great doyen of historians of his time, had a full office full of, scholars who were translating documents and sources for him. So, I mean, I think you did the right thing to keep on consulting. लेकिन मेरा so सवाल तो अभी ये मैं एक मैं आपका बीच में एक बात काटूंगी नदीम, क्योंकि ये जी सवाल बहुत लोग करते हैं। तो ये मैंने पूरा प्रोसेस जो है असारुल सनादीद के प्रेफेस में लिखा है कि किसने मेरी कितनी मदद की और कैसे, जैसे कि अदरा नकवी हैं, शी इज पोएट, उन्होंने पकड़ा अलकाब कि अरे इसमें तो राइम पैटर्न है। फिर जब उन्होंने राइम पैटर्न पकड़ा, दैट इज व्हेन इट बिकेम इजी, बिकॉज बिफोर दैट हमारे मुफ्ती साहब कहते थे कि मैडम ये तो इतनी बलागत है, ये तो वही चीज अरबी में कह रहे हैं, वही चीज फारसी में कह रहे हैं। सो यू नो लाइक, एंड वी डिडंट नो कि कहाँ खत्म हो रहा है, क्योंकि पंक्चुएशन तो होता नहीं है। तो फिर जब अदरा आपा ने पकड़ा, राइम पैटर्न पकड़ा, दैट इज व्हेन इट बिकेम इजी। और फिर as I said, सबने, मतलब मैंने तो I have been very honest about everything that I have done, क्योंकि जो चीज मैंने करी है उसका मैं क्रेडिट लेती हूँ, जो मैंने नहीं किया उसका मैं क्रेडिट देती हूँ। Right. That is there, as you say in your introduction हाँ, also. So that is a fact, and no one can dispute you. अगर किसी को है तो आपका इंट्रोडक्शन पढ़ लें, है ना? वो नहीं है। अब मैं आपसे दूसरी बात पूछ रहा हूँ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो आसार सनात, बिकॉज आवर टॉपिक इज हेरिटेज, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो आसार सनादीद के फर्स्ट वर्जन में जिस टाइप से इन स्ट्रक्चर्स को डिस्क्राइब किया गया है और वर्जन 2 में, अपार्ट फ्रॉम वर्बोसिटी, क्या कोई डिस्क्रिप्शन में कोई फर्क आपको नजर आया? क्वाइट अ लॉट एनी? ऑफ हिस्टोरिकल इनएक्यूरेसीज, क्योंकि उन्होंने जब अपनी दोबारा से जो वॉल्यूम एडिशन 2 है उसमें उन्होंने खुद ही लिखा है कि मुझे पहले इसके बारे में नहीं मालूम था, अब ये मालूम है, सो ही डॉक्यूमेंट्स के चाहिए फलां जो है, एग्जैक्टली मैंने उसमें लिखा हुआ है, इस वक्त मुझे इतना याद नहीं आ रहा है कौन कौन, बट देर आर सम, जैसे इन्होंने मेजरमेंट्स ऐड किए हैं इन सेकेंड एडिशन,
there is more historical information and less narrative. पहली में narrative, it's a very chatty style, which is what I liked. कि जो वो एक उनका कुतुब मीनार का जो वो वाकया है कि वो बैठे हुए थे और कुछ लड़कियां आती हैं और कहती हैं मियाँ जी हम हराम के हैं कि हलाल के हैं, that is missing in the second edition. सो मुझे ये सारे जो थे ना इस तरह के जो वाकया थे मुझे बहुत अच्छे लगे. आई हैव केप्ट इट इन माय बुक्स, इन माय ट्रिलॉजी आल्सो, एंड इसमें तो खैर है ही. तो ये सारे जो है वो फर्क है. एक तो लैंग्वेज का भी फर्क है थोड़ा सा. जो सेकंड वाली है दैट्स मोर ड्राई भी है, थोड़ी आसान भी है. हिस्टोरिकल उसमें क्या कहते हैं फैक्ट ज्यादा है, लेकिन वो जो रस है वो कम है. Right. Now, I mean, there are many more questions which one can put to you because you are sitting before us regarding your translations of these sources. बहुत से सवाल उठ सकते हैं और जाहिर है कि क्रिटिक बनने में कोई खर्च नहीं होता है. किसी के भी काम को आदमी आराम से क्रिटिसाइज कर सकता है, वो कर सकता है और करना भी चाहिए. आई थिंक अगर किसी स्कॉलर को डेवलप करना है तो क्रिटिसिज्म को बिल्कुल करना चाहिए, वो लोग उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए. लेकिन बेसिक चीज ये है कि उसके आगे बढ़ना चाहिए. I mean, so I think you did learn a lot. Now, after that, I would ask you a few questions on your Delhi trilogy, which you had written 3 books on Delhi. For example, the first one which you wrote on Delhi trilogy, Where Stones Speak. The second one which you wrote in the same series was The Forgotten Cities of Delhi. And third, शाहजहानाबाद. राइट. तो क्या आप हमारे ऑडियंस को इन तीनों के बारे में एक एक करके वेयर स्टोन स्पीक पे आपने क्या चीजें पिकअप की, कौन से किस टाइप के आपने मॉन्यूमेंट्स को हाईलाइट किया और क्या अंदाज रखा, और जाहिर है कि जब आपने उसे छापा होगा तो कुछ उसमें आपको प्रॉब्लम्स नजर आई होंगी, कुछ इश्यूज नजर आए होंगे जो आपने सेकंड में रिफॉर्म किया होगा फॉरगॉटन सिटीज ऑफ दिल्ली में, एंड देन द वर्क ऑन शाहजहानाबाद. तो एक एक के बारे में जरा ब्रीफली अगर आप इन तीनों किताबों के बारे में आप जरा सा हमारे ऑडियंस को बता दें. जो पहली वाली मेहरोली पे है वे स्टोन स्पीक, वो तो मैंने मतलब शुरू करी थी एज आई सेड एज अ पार्ट ऑफ माय एक्सपीरियंस एज अ विजिटर टू मॉन्यूमेंट, और मेरा जो हिस्ट्री का बैकग्राउंड था उसमें कहीं ना कहीं काम आया बिकॉज आई केप्ट लुकिंग अप सोर्सेज, प्राइमरी सेकेंडरी सब कुछ. एंड सबसे ज्यादा उसमें जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट था वाज द फील्ड वर्क. एक एक मॉन्यूमेंट पे जाओ. अच्छा, लिटरली हमने चप्पा चप्पा छाना है मेहरोली का. आई थिंक आई हैव लिस्टेड 52 मॉन्यूमेंट्स इन दैट, एंड उससे ज्यादा जो हैं वो थोड़े बहुत तो टूटे फूटे हैं, इसलिए उनका जिक्र नहीं कर पाई. तो उसमें जो था लाइक इट वाज अ वेरी नरेटिव चैटी स्टाइल दैट आई टुक इन दैट. जब मैंने, अच्छा वो किताब बहुत कामयाब हुई माशाल्लाह. फिर जब मैंने फॉरगॉटन सिटीज लिखी, then by that time I was back in India, I was living here, I had access to a lot more books and libraries and online material. तो फिर मैंने उसमें थोड़े से उसको फैक्चुअल ज्यादा करने की कोशिश करी कि लाइक विद अ लॉट ऑफ रेफरेंसेस. तो खैर शुरू में भी थे, हमेशा से मैंने रेफरेंसेस डाले, बट आई मेड इट, ट्राई टू मेक इट वेरी फैक्चुअल. उसमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा कुछ पार्ट्स जो उसके स्पेशली द बिगिनिंग बिकेम अ लिटिल ड्राई. तो लोगों ने कहा कि अरे ये तो उतनी इंटरेस्टिंग नहीं है पढ़ने में जितनी पहले वाली थी. तो फिर जब मैंने शाहजहानाबाद लिखी, लाइक इट्स बीन वेरी इंस्टिंक्टिव विथ मी. As I said, my training as a scholar of history, as well as my inclination towards storytelling, that is something that has been instinctive. मैंने कभी कोई एक स्टाइल डेवलप करने की कोशिश नहीं की, स्टाइल पकड़ने की कोशिश नहीं की, सीखती रही, मुस्तकिल सीखती रही और अभी भी सीख रही हूँ. तो जो पहली वाली किताब में जो लोगों ने मुझे कहा अच्छा ये मिसिंग था, ये अच्छा था, वो मैंने सेकंड में इनकॉर्पोरेट किया. जो सेकंड में था वो थर्ड में इनकॉर्पोरेट किया, इवन टुडे. सो मैं मतलब I keep continually trying to update myself because continuous learning is
हाँ, तो पहले वाले में आपने मेहरौली के मॉन्यूमेंट्स को लिया। जी, मेहरौली था, फिर सेकंड में जो था बाकी डायनेस्टीज़ जो हैं फ्रॉम अलाउद्दीन खिलजी टिल शाहजहानाबाद, क्योंकि हम लेके चले अगर 7 सिटीज़ ऑफ दिल्ली, तो मेहरौली वाज़ द फर्स्ट, उसके बाद फिर वो सिरी, जहाँपना, फिरोज़ाबाद, तुगलकाबाद, ये तो सारा क्या किया उससे एंड जब किसी मॉन्यूमेंट्स को आप डील कर रही होती हैं किसी इस किताब में, तो क्या उससे जो कनेक्टेड पॉपुलर लेजेंड्स हैं, हुँ, यू आल्सो डिस्कस देम, यू टेल देम? येस, हुँ, दैट आल्सो Any अलोंग विथ popular ओरल हिस legend which येस, you येस। just remember that you would like people to know? यस, ओरल हिस्ट्री एज वेल एज पॉपुलर लेजेंड्स आर आल्सो अलोंग देयर, कि भाई लोग जो है जो उसके आसपास मॉन्यूमेंट के रह रहा है, ही इज इन्वेस्टेड इन दैट मॉन्यूमेंट, एटलीस्ट आई वुड वांट हिम टू बी इन्वेस्टेड इन दैट मॉन्यूमेंट। एंड जो मेरे जैसे सोशल मीडिया पोस्ट होते हैं इतने, आई पुट इट एवरी डे कि देखिए जब आदमी को एक उनसियत सी होगी, एक एम्पैथी होगी फॉर अ मॉन्यूमेंट, उस मॉन्यूमेंट की जिंदगी उसी पर डिपेंडेंट है, बिकॉज अदरवाइज वी सी सो मच ऑफ अब्यूज ऑफ मॉन्यूमेंट्स, के भाई क्रिकेट खेल रहे हैं, तोड़फाड़ मचा रहे हैं, so many of these monuments like that बदी मंजिल and all that, वहां पे I go often to there, तो छत के ऊपर बियर बॉटल्स टूटी हुई मिलेंगी, that's because people don't know कि ये क्या था, क्या है, ये क्या हमारा हेरिटेज है, एक तो ये us versus them जो एक मुसीबत शुरू हो गई है। So I try to create that kind of empathy through my book and my social media posts, कि भाई ये हमारी विरासत है, ये सबकी विरासत है। So that is something that I try to do in my book. And second वाली forgotten cities में सिरी, जहांपना, तुगलकाबाद, दीनपना, फिरोजाबाद, ये 5 सिटीज है। और फिर ऑफ कोर्स देन यू कम टू शाहजहानाबाद। तो शाहजहानाबाद एज यू नो इट इज इतनी बड़ी एक वो है, तो उसमें थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी उसकी है। हिस्ट्री कम है ऑफ द रेन, बट मोर ऑफ वट एवर इज रिलेटेड टू द मॉन्यूमेंट, के वो लाल किला है, जामा मस्जिद है। जामा मस्जिद की हिस्ट्री में मैंने लिखा एंड 1857 प्लेज अ ह्यूज पार्ट इन शाहजहानाबाद, तो 1857 की हिस्ट्री काफी कवर्ड है उसमें। और किस तरह से मॉन्यूमेंट्स 1857 में बिगड़े, 1947 के बाद क्या हुआ। सो ऑल्दो द मॉन्यूमेंट दैट आई हैव टेकन दिस थिंग इज के भाई 1857-58 तक के ही मॉन्यूमेंट्स मैंने डिस्क्राइब किए, बट उनकी एक what how they fared after 1947 is what the part of my Shahjahanabad is, because in forgotten cities I have not वो जो monuments हैं वो सब living monuments नहीं है, वो सब अपने अकेले अकेले, except for one or two, जैसे कि भाई वो खैरुल मनाजिल की मस्जिद है, it's a functioning masjid. Most of the monuments are just monuments, they are you know they do not function as living spaces. लेकिन शाहजहानाबाद is a living space. तो जब मैंने शाहजहानाबाद की किताब लिखी तो for me it was very important to take the interviews and the same reactions and emotions of the people who are living there, who are invested in it. तो आप जब जैसे कि अगर जैसे पहाड़ी इमली है, अब उसके इलाके में इनका घर है, ये जो बहुत मीर पंजाकश। अब मीर पंजाकश के घर के बारे में जब मैं बात कर रही हूँ, तो पूरे पहाड़ी इमली के मोहल्ले की उसकी एक हिस्ट्री के बारे में भी बात कर रही हूँ। वहाँ जो लोग रहते हैं, जैसे मिर्जा चंगेजी हैं, शाह वलीउल्लाह लाइब्रेरी है, अबू सुफियान है। मुझे इन सब का बहुत ज़्यादा मतलब देयर इनपुट इनटू द बुक एंड देयर फीलिंग्स, दैट्स पार्ट ऑफ इट। सो शाहजहानाबाद इज नॉट जस्ट अबाउट मॉन्यूमेंट्स which are empty, but also about a city which is thriving with monuments in which people are living and invested in it. जब आप So, शाहजहानाबाद पे काम कर रही थी, तो एक किताब बहुत फेमस शाहजहानाबाद पे आई थी, स्टीफन ब्लेक की। जी, तो डिड यू कंसल्ट दैट? I consulted it. उससे मैंने क्या कहते हैं, एक तो हवेलियों का स्ट्रक्चर लिया था कि he has recreated the structure of the हवेलीज. The other thing that I found very interesting in that book, and which I have I think quoted also, is that करमुख, the plan, the वास्तु शास्त्र, के शाहजहानाबाद जो है वो एक और जो वो सारा बना है वो एक वास्तु शास्त्र के हिसाब से बना है। So wherever I have taken, मतलब स्टीफन ब्लेक को मैंने पढ़ा था, एंड जैसे एक वो मौलवी इनकी बशीरुद्दीन अहमद साहब की किताब में है कि अली मर्दान की हवेली, वो जो है आईटीओ। So these things I took, then I tried to relate them. So like just it was just a reading of historical texts. It was also my own experiences of going there, experiencing them, and talking about them. And that personal touch is something which is there in all my books. Okay? I am there, I am invested in the book. जो भी मेरी किताब पढ़ेगा वो मेरे बारे में भी जानेगा थोड़ा सा. Now, your first book of the series,
वेयर स्टोन्स स्पीक। तो क्या आंसर मिला आपको? सब कहानियाँ सुनाते हैं, सुनने की ज़रूरत है। एक एम्पैथी चाहिए सुनने के लिए। वो जो So बचपन से हमने after, मतलब वो एक after बच doing all these three works, did you ever take up the work of conservation and preservation, or talking about how these monuments should once again be brought forward in the public perception? उसके बारे में कुछ आपने किया? ये किताब में तो नहीं, लेकिन हाँ, सोशल मीडिया पोस्ट में मैंने काफ़ी किया है। हमारे साथ पॉल इब्राहिम जुड़े हुए हैं, हू इज़ विद द हिंदुजा फाउंडेशन। अब जैसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ वाटर बॉडीज़ हैं, जिनका कंज़र्वेशन कर सकें। सो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ बीइंग डन ऑन द साइड। इट्स नॉट पार्ट ऑफ माय बुक, बट इट्स पार्ट ऑफ माय द अदर एक्टिविटीज़ दैट आई डू। कि काफ़ी जगह जैसे कुदसिया मस्जिद जब टूटी है, मुबारक सॉरी नॉट कुदसिया, मुबारक मस्जिद जब टूटी है, तो आई ट्राई टू कनेक्ट वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड टू पीपल देयर सो दैट उसकी भी अब मरम्मत चल रही है। सो अमिता बेग आई थिंक इज़ आल्सो विद अस। तो दीज़ आर थिंग्स व्हिच आई हैव ट्राइड। वो मेरा एक अलग से चलता है व्हिच आई डोंट वांट टू ब्रिंग इनटू द पब्लिक। अभी आपने पूछा तो मैं ज़िक्र कर रही हूँ, वरना दीज़ आर थिंग्स व्हिच आई डू along with it, but not in my books. In my book, I do talk कि हाँ इसको बहुत जरूरत है कंजर्वेशन की, लेकिन बस वहीं तक मैं छोड़ देती हूँ। In all these three books, uh, I mean, as I said, asked you earlier also कि दिल्ली में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, some major, some minor. आपकी किताब जब पलट के कोई देखता है तो उसमें दोनों टाइप के मॉन्यूमेंट्स उसमें डिस्कस नजर आते हैं, कुछ बहुत मेजर हैं, कुछ माइनर हैं। आपने कैसे पिक एंड चूज किया था? हाउ यू डिसाइडेड दैट which monument should be highlighted as far as Delhi is concerned in all these three books? देखिए मैंने बशीरुद्दीन अहमद साहब की किताब ली, जहाँ जब मेहरौली मैंने किया था, तो मेहरौली में तो आई जस्ट वॉक्ड अराउंड। इट्स छोटा एरिया है, तो उसमें तो हम चलते गए, जो भी हमें मॉन्यूमेंट्स दिखे उसके बारे में मैं आई वुड नोट डाउन, फोटोग्राफी करती थी बहुत एक्सटेंसिव। मेरे पास आई हैव 2 टीबी ऑफ क्लाउड, इतनी तस्वीरें हैं मेरे पास। तो मैं तस्वीरें लेती थी, उसके बाद आके फिर किताबों में देखती थी, रेफरेंस करती थी। देखिए, सिर्फ तस्वीरें लेना इज नॉट एक्सप्लोरेशन। नहीं, दैट इज़ एक तस्वीरें तो सो दैट फॉर रेफरेंस लेटर ऑन, बिकॉज़ जैसे कि अब मैं अगर आके पढ़ रही हूँ कि फलाँ जगह ये मेडालियन है, उसपे ये लिखा हुआ है। अब उस वक़्त मैंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मैं आके तस्वीरों में देख के इलाज करके फिर उसको पढ़ती हूँ। दैट तस्वीरें इसलिए होती हैं रेफरेंस के लिए। बट एज़ आई सेड, मेहरौली में तो मैंने ऑलमोस्ट एवरी मॉन्यूमेंट लिया है, बिकॉज़ इट इज़ अ स्मॉल कंटेन्ड एरिया। लेकिन जब फॉरगॉटन सिटीज़ में लिख रही थी, तो दिल्ली इतना बड़ा है कि मेरे लिए पूरा छानना उसको मुमकिन नहीं था, इस तरह से पैदल जैसे मैंने मेहरौली छाना था। तो मैंने फिर मौलवी बशीरुद्दीन अहमद की किताब ली, उनके मॉन्यूमेंट्स मैंने देखने शुरू किए। अब मैं वो लिस्ट करती थी पूरे, उन्होंने कौन-कौन से मॉन्यूमेंट्स लिखे, उसमें से कौन से इस वक़्त मौजूद है। जैसे एक उन्होंने मैंने बहुत ढूँढा, मुझे मिली नहीं। एक वो कहते हैं कि तुगलकाबाद के पास एक दरगाह थी जिसका नाम था 100 बातों की दरगाह। अब मैंने बहुत ढूँढा कि भई ये 100 बातों की दरगाह कहीं मिल जाए, तो फिर आई वुड गो एंड एक्सप्लोर इन दैट एरिया। अब के जैसे उसमें गोल्फ क्लब में गई, जेएलएन स्टेडियम में गई। जब गई तो फिर अच्छा यहाँ कोई है, दे वुड से अच्छा हाँ है तो पता नहीं, तो उनकी लैंग्वेज फिर बोलनी पड़ती थी। गुमती है, गुंबद है, मदार है, ये है, वो है, तो फिर खैर करते-करते ढूँढा। इट टूक मी अ लॉन्ग टाइम, इट टूक मी 2-3 इयर्स टू डू इट, और अभी भी मुझे So लगता है कि मैं सब नहीं देख पाई। did you after writing these three books, did you compile a list of those monuments which are now missing but have been mentioned by Zafar Hasan or Sir Syed Ahmed? आई हैव नहीं, किताब में ही है। इस किताब में भी लिखा है, शाहजहानाबाद की किताब में भी मैंने लिखा है कि ये यहाँ पर था, जैसे स्पेशली लाल किले में, कि ये जो बिल्डिंग्स जो मिसिंग है, वो सारा मैंने मेंशन किया है कि ये जैसे आर्केड्स है साइड में, गैलरीज हैं, वो हीरा महल, एक मोती महल, एक हीरा महल, आउट ऑफ दैट आई थिंक मोती महल इज मिसिंग। मोती महल के लिए ये लिखते हैं सैंडरसन कि इट केम इन द वे ऑफ ब्रीज टू द बैरक सो दे ब्रोक इट।
So I have mentioned all the के सर सैयद That is अहमद in खान ने, context with Shahjahanabad, as you say. हाँ But what हाँ हाँ, about the other two इन द books? फॉरगॉटन सिटीज मैंने लिखा है कहीं, Shahjahan, जी जी जी, कहीं कहीं लिखा है कि यहाँ पे ये होना चाहिए था, ये नहीं है, जैसे ये 100 बातों की दरगाह जो है इसके बारे में मैंने जिक्र किया है। लेकिन इतने ज्यादा उसमें मॉन्यूमेंट है, 1300 मॉन्यूमेंट्स करीब दिल्ली में है, तो उसमें समझिए मेरे ख्याल से कुछ 800-900 तो इन 5 शहरों में होंगे। सो इसमें मैंने इतना डिटेल्ड नहीं डिस्कस किया है कि कौन चीज मिसिंग है, लेकिन शाहजहानाबाद में किया, बिकॉज जो एरिया छोटा है वो उसको एक्सप्लोर करने में भी आसानी होती है। पहले मैंने एक्चुअली 5 किताबें सोची थी, लेकिन फिर इट बिकेम अ लिटिल टू एम्बिशियस, तो मैंने फिर उसको एक को कंडेंस कर दिया। लेकिन फॉरगॉटन सिटीज में भी आई थिंक इसमें भी 2 किताबें बन सकती हैं। well, Rana Appa, I think in दिल्ली के मॉन्यूमेंट्स पे जो आपने ये 3 किताबें लिखी, इस पे डिस्कशन जाहिर है एक और भी हो सकता है। मैं इस वाले पार्ट को सिर्फ ये कह के ख़त्म करूँगा कि मुझे भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हुआ exploring monuments in Delhi. Way back, I think it's been around 15 years or 20 years, possibly 20 years or more than that. I'm talking about the time when Professor Irfan Habib was the chairman of ICHR, so a pretty long time back. He asked me to accompany him to Delhi and drop me at Golf Club. And he asked me, I had a photographer and one of the surveyors along with me. And there was a letter which I had from the chairman ICHR recommending my name and introducing me to the authorities at the golf club. So we entered the golf club, and my resume was to, go and record whatever is left there. Because we had only a few hours, so I was not supposed to go into the details. It was supposed to be just an introductory, exploratory trip where I would be photographing some of the monuments and noting down brief descriptions about some of them. But when we entered, I went to the office, showed my letter. They allowed me to go inside, and once we went inside, I encountered almost the same thing as you were just mentioning, that whiskey bottles strewn around, building material, almost destroying the monument, certain monuments floors being dug, converted into pools. And it was at that spot where a heritage structure had been, almost destroyed by creating a pool. I was taking a photograph when the security people of the, golf club entered, broke our camera, and almost arrested us. The only thing I would say, क्योंकि जाहिर है कि गोल्फ क्लब बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में होता है, so we were literally bundled off to the office of whosoever the secretary was. He was some senior IAS officer. He was kind enough कि वो थोड़ा बहुत डांट फटकार के बाद, when I actually became strict and I said that I am going to report against you. How dare you, after you allowing me, how dare you stop me from recording these things? तो उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, वो बस आप ये मत खींचिए, इतनी परमिशन थी और आप यहाँ से वापस चले जाइए, है ना? ये मैंने मतलब इसका So जिक्र किया what है। I'm हाँ trying to drive is that Rana Appa, having covered the entire city of Delhi, you must have experienced, such things. It is also reflective of the fact that how those who are given the charge of protecting these monuments, they are in fact playing with the monuments. And that is why I asked you a question. I think that is a great, responsibility which lies on people जी, who are exploring these monuments, to also come out as the champions of the heritage. तो I mean, इसमें जहां तक you इसका being a सब, student of history, to come forward and fight for the जी, conservation and preservation of these monuments.
तो जहां तक आप जो इसका बात कर रहे हैं सैयद आबिद के मकबरे की, तो हुआ क्या है, विच आई हैव डिस्क्राइब्ड इन द फॉरगॉटन सिटीज, कि एक किसी और अननोन आदमी के मकबरे पे लिखा हुआ है सैयद आबिद, और सैयद आबिद जो एक चारबाग था और मॉन्यूमेंटल दरवाजा था सब था, दैट इज नॉट नेम्ड एट लेबल्ड एट ऑल, विच आई हैव वेरी क्लियरली स्टेटेड इन माय बुक कि दिस इज एक्चुअली सैयद आबिद, बिकॉज इफ यू सी असारुस सनादीद, उसमें असारुस सनादीद में तो इसकी तस्वीरें हैं, तो यू कैन रिकग्नाइज कि ये है वो नहीं है. I don't know whether now that has been corrected or not, but it is something that I have described in the book. और जो आप बात कर रहे हैं झगड़े की, ये जमरुदपुर में 5 मकबरे हैं. जमरुद खान का वो इलाका था, उनकी फैमिली के मकबरे हैं. वो 5 मकबरे शायद मैंने देखे हैं, एक दो और लोगों ने देखे होंगे. पांचों किसी को दिखाई नहीं देते क्योंकि वो छुपे हुए हैं अंदर. तो जब मैं पहली बार गई वहां पे, तो जो वहां पे लोकल लोग थे, दीज आर अनलिस्टेड, ये लाल डोरा है, अनलिस्टेड मॉन्यूमेंट्स है. जब मैं गई तो लोकल वहां से एक दो लोग निकल गए, आप यहाँ क्यों आई हैं? मैंने कहा देखने आई हूँ. आप तस्वीर नहीं ले सकती? मैंने कहा अच्छा, आप मुझे ऑर्डर दिखा दीजिए कि मैं तस्वीर नहीं ले सकती, तो मैं नहीं लूंगी जब तक के तो मैं ले रही हूँ. तो खैर मैंने ली. उसके बाद थोड़ा उन्होंने झगड़ा किया, कुछ किया, बट आई सेड देखिए आप मुझे रोक नहीं सकते, मैं तस्वीर ले रही हूँ. एंड इफ देयर इज एन ऑर्डर दैट यू हैव फ्रॉम एएसआई दैट आई कैन नॉट फोटोग्राफ इट, आई विल गो अवे. ही हैड नो सच ऑर्डर, सो ही कुडंट से एनीथिंग मच. अच्छा, इन लोगों को क्या लगा कि कोई औरत है, इसको थोड़ा हम धमका लेंगे, ये चली जाएगी. दे डिडंट रियलाइज के यू नो लाइक आई एम मेड ऑफ स्टर्नर स्टफ. फिर हम अंदर गए. देयर वाज अनदर हेरिटेज लवर, एक लड़का था सलील करके, वो मेरे साथ था, यंग बॉय. हम लोग फिर अंदर गए तो एक जो उसका एक गुंबद है, वो जो है हमको मिले ही नहीं. 4 हमने लोकेट कर लिए थे, 5वां नहीं मिल रहा था. तो फिर वी स्टार्टेड आस्किंग अराउंड, कहाँ है कहाँ है, तो किसी को नहीं पता था. फिर एक वहां से वन ऑफ दीज मेड्स, डोमेस्टिक हेल्प, दे वर वर्किंग वॉकिंग अराउंड, एंड आई आस्क्ड हर एंड शी सेड के आप इधर जाइए. एक घर था. शी सेड देखिए यहाँ लोग बैठे हुए ना, यहाँ पे कुछ है. हम अंदर गए तो देखा पलंग डाले हुए, कुछ औरतें बैठी हुई थी, एंड देयर वाज अ लॉक्ड गेट. सो आई सेड ये कौन है? ये दादा पीर का मजार है. आई सेड इसको कैसे देख सकते थे? ऊपर छत से देखना पड़ेगा. हम 6 मंजिलें चढ़ के ऊपर गए. जब ऊपर से झांका तो देखा चारों तरफ से वो इनक्रोच था, और वो बीच में गुंबद दिखाई दे रहा था. सो देन आई रोट अबाउट इट, आई ब्लॉग्ड अबाउट इट. फिर एक स्पेनिश क्रू था विच contacted me and said we want to, you know, like we've been hunting about these Zamurudpur tombs and you are the only one who seems to have seen them. So then I took them. जब मैं गई तो फिर वही सेम आदमी निकला, लोकल वही था, लैंडलॉर्ड कोई. एंड ही सेज कि आप फिर आ गई? मैंने कहा हाँ आ गए, अब आप क्या कर सकते हैं इसके बारे में. सो आई वेंट कपल ऑफ टाइम्स. और वहां एक गुंबद जो वहां का सबसे बड़ा गुंबद है, वो लोकल्स ने किराए पे दे रखा है. वहां पे एक दो तीन कुछ गाय पली हुई हैं, कबाड़ी वाले हैं, कबाड़ी रखने के लिए 1500 रुपए महीने में उसके हिस्से किराए पे दिए हुए हैं. सो आई हैव हाईलाइटेड ऑल दैट कि ये चीजें हो रही हैं. लेकिन अब आगे लोगों को और आना चाहिए कि व्हाट टू डू अबाउट इट, because I feel my job is to document everything that is happening today. Well, Ranapa, I think an hour has passed and we have yet to reach your latest book. So let us go to that. The last book of yours, A Saint, A Folk Tale, and Other Stories, Lesser Known Monuments of India. This is once again, till date, it's a well received book. I have been hearing a lot of praise uh, for this book on social media, and after reading all those commendable posts on this book, I had no option but to buy it. Now, this book, which you have written, is one of your first works where you go outside Delhi. पहली बार आप दिल्ली के बाहर निकली, है ना? और आप एक किताब लिखती हैं जिसमें सूफी संत के बारे में भी, उनके भी जगहों के बारे में है, फोक टेल्स भी हैं, बहुत से और मॉन्यूमेंट्स हैं जो हिंदुस्तान भर में बिखरे हुए हैं. You have at least 20 chapters dealing with places. It appears that in these 20 chapters, you have dealt with 23 monuments. क्योंकि बाज दफा जो चैप्टर हैं वो शहर वाइज हैं, और शहर के अंदर एक एक दो दो आते हैं, बाज दफा कुछ शहरों में आते हैं दो दो भी आपने
टेक अप कर लिए हैं, जिसकी फॉर एग्जांपल यू स्टार्ट विथ थानेसर, the tomb of so-called tomb of Sheikh शेख Chilli. चहली. Then we have the second chapter, and remember, Thanesar is in Haryana, North India. The next chapter, and the monument actually architecturally belongs to the period of Akbar. Akbar and Jahangir, right? Your next chapter deals with a monument, Ahu Khana, at Burhanpur, the doorway to the Deccan. Third chapter, you suddenly jump to Bengal, Pandua. There you take up Adina Masjid. Although there are many other monuments at Pandwa Sharif, but you pick up one of the most popularly prominent monument, Adina Mosque. And then from Pandwa, you go to Gujarat, Champaner. From Champaner, you return back to North India, Allahabad. From Allahabad, you go to Kalinjar. From Kalinjar to Junagadh. From Junagadh to Rohtas. And this is how you continue and end up at Ahmedabad in your last chapter. You know. So मैं जो पूछ रहा हूँ, I mean the question which I have is, why this haphazard? I mean, there is neither a chronological sequence in dealing with the monuments and places, nor some sense of direction. You should have followed a particular path. So how you selected to highlight? Possibly it was as per their importance or whatever. So I would like to hear how you chose those monuments. Number one, I mean, how those particular monuments were chosen by you. Number one. Number two, why this type of a sequence where there is a zigzag from Sultanate to Mughal, Mughal to Sultanate, Sultanate to British period, so on and so forth. Why this going backward and forward, both in space and in time? So this book is primarily travel writing, and the most of the cities are standalone. तो इस वजह से आई हैव नॉट फॉलोड एनी क्रोनोलॉजी हियर व्हिच आई हैव डन. जैसे कि अगर आप दिल्ली ट्रिलॉजी देखें तो देयर इज अ क्रोनोलॉजी एंड अ जियोग्राफिक, एक्चुअली नॉट जस्ट अ क्रोनोलॉजी, देयर इज अ जियोग्राफिक क्रोनोलॉजी इन माय प्रीवियस बुक्स. बट इसमें ये स्टैंड अलोन है सारे, बिकॉज दीज आर जस्ट रिकमेंडेशंस फॉर ट्रैवलर्स कि अगर आप मतलब you should go there and you should see this, and these are the things which are highlighted for me. As far as choosing the monuments are concerned, these are the places. मेरे अभी पिछले कुछ 4-5 सालों में काफी जगह हिंदुस्तान में घूमा है, and the places which appeal to me the most, ये बहुत ही एक instinctive जो कहते हैं ना कि आहू खाना जो है is something that I can't get out of my head, कि वहां जाके जो मुझे एक मायूसी सी जो हुई थी आहू खाना में, वो आज तक मौजूद है. हालांकि 8 साल हो गए हुए मुझे वहां पे. तो मैं एक क्रिटिसिज्म और मैं कर दूं, उसके बाद फिर हाँ आप. जी, बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए. जैसे मतलब जो अगर आप ज्योग्राफिकल लोकेशन और हिंदुस्तान की टेरिटरी को देखें तो नॉर्थ इंडिया के आपने 16 मॉन्यूमेंट पिकअप किए. दक्कन से 4 किए, राइट. साउथ टोटली एब्सेंट, नॉर्थ ईस्ट टोटली एब्सेंट, राजस्थान इतने मॉन्यूमेंट्स हैं वहां, आपका कोई रिकमेंडेशन नहीं है उस पे. ये आएगा. क्या आएगा. See, this is what I have डिफिकल्टी हुई इसको अंडरस्टैंड करने. See, this is, as I said, this is a travel book based on my experiences and my travel. तो अभी जहां तक मैं गई हूँ वहां तक का कर रही हूँ. अब आगे जब जाऊंगी तब आगे का करूंगी. And I hope to continue this series and have a sequel. जिसमें मैं नॉर्थ ईस्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैवल देयर. आसान नहीं है मेरे लिए वहां जाना. आई डू, एज यू नो, आई डू सोलो ट्रैवल. तो सोलो ट्रैवल में नॉर्थ ईस्ट इज अ बिट ऑफ अ चैलेंज. सो आई एम नॉट श्योर दैट आई कैन कवर नॉर्थ ईस्ट. राजस्थान के मैं प्लान्स बना रही हूँ, बट राजस्थान इज एक्चुअली वेरी वेल नोन, तो इसलिए राजस्थान को मेरी जरूरत है नहीं.
तो राजस्थान के तो खुद ही इतने ज़्यादा किताबें हैं, वहाँ तो इतनी ज़बरदस्त टूरिज़्म चल रही है। सो मेरा एक पॉइंट ये था कि जो नहीं, मैं आपको एक बात बताऊँ। जैसलमेर में, जो जैसलमेर ज़ाहिर है वो अपने गोल्डन फोर्ट के लिए जाना जाता है। हुँ, राजस्थानी आर्किटेक्चर के लिए जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि जैसलमेर के अंदर एक अकबरी मॉस्क भी है। हुँ। इट्स अ जेम ऑफ अ मॉस्क। So don't say that Rajasthan doesn't need to be introduced in the fashion that you are doing it. चलिए ठीक है, अब मैं आपका ये पॉइंट जैसलमेर में गई नहीं हूँ। अब ये मैं पॉइंट रखती हूँ, इसको याद करूँगी। और आपने एक दफ़े पोस्ट किया था जो मेरा ऑन माय बकेट लिस्ट है, वो आपने एक ताज़िए की कोई बिल्डिंग करी थी कुछ जी हाँ, मुहर्रम में। सो दैट इज़ ऑन जी। माय बकेट लिस्ट। सो दीज़ आर प्लेसेस। अब देखिए एक मैं जिसको कहते हैं ना अकेली जान कहाँ-कहाँ जाए। सो सिंस आई एम ट्रैवलिंग अलोन, आई एम ट्रैवलिंग और 2 साल से तो कोविड है, तो 2 साल से तो कहीं गए ही नहीं है। सो देयर आर लॉट। अभी जैसे अभी मैं गई थी नकोदर, तो वो इत्तेफाक से हम सरहिंद गए और सरहिंद से नूर महल जा रहे थे और रास्ते में हम रास्ता भूल गए एंड वी वेंट इन एंड सडनली आई सॉ एक गुंबद दिखा। मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा चलो ये क्या गुंबद है, उधर चलते हैं। तो देन आई फाउंड कि वो परिहार साहब ने जो अपनी किताब में, बल्कि उनकी कवर में है, कवर में वो उस्ताद शागिर्द का जो मकबरा है। एंड आई सॉ दैट एंड आई वेंट एंड आई एम स्टिल लाइक आई वांट टू राइट द सेकंड बुक जस्ट टू डिस्क्राइब दैट, कि Uh, वो जो है इट्स सच अ let स्टनिंग सेट right. ऑफ मॉन्यूमेंट। सो लाइक नहीं, इस तरह की डिस्कवरीज चल रही हैं अभी और देखिए चलती रहेंगी। अभी आई एम वर्किंग ऑन नहीं, आपकी एक आपकी किताब नई आई है, बहुत मतलब वेल रिसीव्ड है, मैंने पढ़ी एंड हाँ, आई आई हाँ, मस्ट कांग्रेचुलेट यू कि आपकी जो दिल्ली की ट्रायलॉजी से बेटर मुझे इसमें लगा, क्योंकि बाय नाउ यू हैव गेन्ड सम within inverted commas maturity with dealing with हाँ, monuments. तो एक जोरा थोड़ा सा वो अलग है, लेकिन जाहिर है कि आई थिंक के देर आर सर्टेन थिंग्स जो उसमें है। फॉर एग्जांपल आपने जिस तरह आपने कहा कि ये पर्सनल आपकी टेक है जहाँ जहाँ आप विजिट कर पाए, स्टिल मैं ऑडियंस को पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि आपके जो 23 मॉन्यूमेंट्स हैं उनमें एंशियंट के 3, प्री मुगल 6, मुगल 5 और एक आध पोस्ट मुगल है ना? तो मतलब इस टाइप से आपने चूज किया है। ये सिर्फ पब्लिक को मैं बता रहा हूँ। जहां तक नेचर ऑफ मॉन्यूमेंट्स का सवाल है, आपके पूरे किताब में, इस पूरी किताब में अगर आप जितने भी 20 या 23 मॉन्यूमेंट्स अगर आप इफ यू लुक एट देम, यू विल फाइंड दैट देर आर 8 टूम्स। सबसे ज्यादा जिनको आपने डील किया है, दीज आर दी टूम स्ट्रक्चर्स। 8, 3 मस्जिदें, 3 मॉस्क्स, टेम्पल अगेन 3 मान लीजिए उसे आपने, 2 प्लस एक और है जो दैट वुड कम अंडर द टेम्पल्स बिकॉज इट्स अ रॉक कट। बहरहाल तो 3 टेम्पल्स उसमें आ जाती हैं, 2 फोर्ट्स। जहां तक पब्लिक स्ट्रक्चर्स का सवाल है, पब्लिक यूटिलिटेरियन स्ट्रक्चर्स का, ओनली 1 बाउली, 2 caves of ancient period, number of graves with grave inscriptions, है ना, and 1 Christian monument, है ना? So this is the total list of things which you have included in this book, which you have written. I just want to have some, mm, you know, words of how, why you chose these particular structures. विजिट तो आपने सब किए, लेकिन उसमें ये सीक्वेंस, ये पर्टिकुलर आस्पेक्ट, जब जाहिर है कि आप कहीं गई होंगी तो आपने सभी मॉन्यूमेंट्स देखे होंगे, कैसे इनको, अब जैसे जहां अदीना मॉस्क की आप बात कर रही हैं, वहीं पे जो खानका है क्रूशली इंपॉर्टेंट, है ना? अदीना को आपने चूज किया, मस्ट बी देयर मस्ट बी सम रीजन। सो कैन यू जस्ट इलैबोरेट व्हाई सी यू चोज सर्टेन डॉक्यूमेंट्स द एंड द अदर्स? खानका जो है वो मेरी एक किताब आने वाली है सूफीज़्म के ऊपर, वो खानका उसमें डिस्क्राइब्ड है, इसलिए खानका मैंने यहाँ नहीं रखी है। अच्छा मेरे लिए ये जो थी मस्जिद
इतने साइज और ग्रैंडर में आपने तो देखी है, इट्स मैग्निफिसेंट, बट आउटसाइड ऑफ बंगाल नॉट मेनी पीपल नो अबाउट इट, सो दैट इज व्हाई आई चोज दैट खानका, एज आई ऑलरेडी सेड। दरगाहों पे मैंने इसमें कॉन्सेंट्रेट नहीं किया, क्योंकि मेरी अगली आने वाली किताब में दरगाहों पे बहुत कुछ लिखा है मैंने उस पे। और जहां तक बाकी है, जैसे बुरहानपुर का तो मैंने ज्यादातर सारे ही डिस्क्राइब किए। बराबर केव्स का जहाँ सवाल है, जैसे बहुत सी चीजें हैं जो मेरा दिल चाहा कि अच्छा मैं इसके बारे में घूमने जाऊं, तो बराबर केव्स का मैंने इरफान साहब ने आके ये कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी कॉलेज में एक उन्होंने लेक्चर दिया था, वेयर ही स्टार्टेड विद बराबर केव्स। Since then this was I think 2007 16 17, Amita Palewal had organized that lecture. जब से मेरे दिल में था कि भाई मुझे बराबर केव्स जाना है, तो जैसे ही मुझे एक मौका मिला, मैंने बिहार में अपना ट्रिप बनाया, तो वहां मैंने पूरा महाबोधि में तो मैं ठहरी थी, सो क्या कहते हैं ये नालंदा, राजगीर, बिहार शरीफ, ये बराबर गया, ये सब किया। बट फॉर मी द I wanted to start with the beginning, that is बराबर caves. अच्छा, जहां आपने पहले सवाल किया ना क्रोनोलॉजी का, मैंने एक क्रोनोलॉजी इसलिए नहीं रखी है बिकॉज आई हैव लेफ्ट इट टू द ट्रैवलर, जो भी जा रहा है विजिटर वहां पे, वो अपने हिसाब से देख ले कि उसको कहाँ कौन से स्टेट जाना है। आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू प्लान, बिकॉज मैं अपने आप जब मैं प्लान करती हूँ तो अब आसान नहीं होता है प्लानिंग, एंड एज आई सेड आई ट्रैवल सोलो, सो दैट इज अप टू द ट्रैवलर कि अगर वो जा रहा है, जैसे आगरा ही जा रहा है, आगरा जाके ताजमहल और फतेहपुर सीकरी और आगरा फोर्ट देख रहा है, तो माय रिकमेंडेशन इज कि भाई वो सिमेट्री भी देख के आओ, रॉयल रोमन कैथोलिक सिमेट्री, डोंट फॉरगेट दैट। आई वुड नेक्स्ट टाइम आई वुड वांट टू कवर क्या कहते हैं अकबर की चर्च जो है, कि भाई अकबर की चर्च भी वहां देख के आओ। सो दीज आर थिंग्स विच पीपल डोंट नो अबाउट, तो इसलिए एक बहुत रैंडम सिलेक्शन है, पर्सनल, इट्स अ वेरी पर्सनलाइज्ड सिलेक्शन and very random selection, and there is no chronology and no geographical location as far as the books is concerned, जो मेरी बाकी किताबों में है। Rana Pa, and it was a real pleasure talking to you. Uh, Remarkable work. I mean, it needs a real stamina, dedication to cover all these things in a short life of ours. There are many monuments which I discovered through your work and would like to visit them. Uh, there are many more which you also should cover. We should cover. India is a place where there are so much that it is humanly impossible for anyone to cover and do justice to all of them. In spite of that, you perform the duty which most historians failed to do, and that is bringing these structures, bringing these monuments back in the hands of the people. सबसे बड़ा काम जब हम लोग एज हिस्टोरियन लिखते हैं तो बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं जो हम में आपस पे टहलती घूमती रह जाती। We had a discussion last week with Shashank Sinha, who has also written on heritage structures. And there also, in fact, I congratulated people like him and you that you people are actually striving to bring the past built heritage into the narrative of public perception. और ये बहुत बड़ा काम है और इसके लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। कीप राइटिंग, कीप डूइंग योर वर्क। आई थिंक इट्स एन एक्सेलेंट वर्क। जहाँ इससे पहले भी मैंने कहा था, क्रिटिसिज्म तो होते रहते हैं, कोई काम ऐसा नहीं है कि जहाँ क्रिटिसिज्म ना होता हो। बहुत से क्रिटिसिज्म ऐसे होते हैं जो समझने के लिए किए जाते हैं, बहुत से क्रिटिसिज्म ऐसे हैं इसलिए होते हैं कि हमने क्यों नहीं काम किया, इन्होंने क्यों कर दिया। आज मैंने भी आपके सामने एज अ क्रिटिक गुफ्तगू की, बट माय क्रिटिक विद यू वाज so that people like me and others should come to understand how work should be done and what else
should be done. Uh, uh, if I mean, it is almost 1.5 hours. Uh, ये काफी लंबा डिस्कशन हो गया है. लेकिन in spite of that, अगर एक दो सवाल, if there are certain relevant questions, if you are ready, then they might be put up to you to answer. यस श्योर। देखिए क्रिटिसिज्म से आदमी सीखता है। इफ देयर इज वैलिड क्रिटिसिज्म या मतलब एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है तो उससे मैं सीखती हूँ। एज यू योरसेल्फ सेड दैट दिस बुक शोज मोर मैच्योरिटी, सो जस्ट शोज दैट आई एम ऑन अ लर्निंग कर्व। और जिंदगी भर सीखते ही रहता है आदमी। और अब आपकी एक बात ख्याल में रखूंगी, मतलब ध्यान में रखूंगी कि अगली किताब को एक क्रोनोलॉजी देने की कोशिश करूंगी। अगली में ये देखिए कोशिश करते हैं। Any questions, Shagufta? Any questions which have been asked? Uh, well, Rana Appa, uh, I would we would end the talk here uh, with once again, uh, thanking you. मैंने भी आपकी तरह काम शुरू किया था एक ज़माने में, लेकिन अल्टीमेटली एज यू मस्ट हैव रियलाइज्ड इसमें काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत होती है, टाइम की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है. इट्स ओनली देन दैट such a work can be accomplished. I am really thanking you and wishing that you will carry on. और आपने जो सीरीज दिल्ली पे ट्रायलॉजी की, आपने कहा कि आप 5 बुक्स करना चाहती थी, तो खैर दिल्ली तो आपने कंप्लीट कर ली, लेकिन अभी हिंदुस्तान में जो आपने मॉन्यूमेंट्स पिकअप किए हैं अपनी लास्ट किताब में, अभी वो तो एक ज़र्रा बराबर है. आई होप दैट यू शुड take them forward, or we would be expecting more such works from you. Thank you for your time, थैंक यू। and thank you for the public who remain connected with us and were seeing this program. Thank you. थैंक यू सो मच।